हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे HPCL 2026 के जो रिक्रूटमेंट है फाइनेंस ऑफिसर, उसके लिए प्रोफेशनल नॉलेज का आज टॉपिक 8 मार्जिनल कॉस्टिंग एंड CVP एनालिसिस के कुछ MCQs यहाँ पे अपन कवर करेंगे। और ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है ये टिल एग्जाम तक जो स्टार्ट रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। वैसे देखिए, फाइनेंस ऑफिसर के लिए ऑल इन वन प्रोफेशनल नॉलेज की PDF अवेलेबल है, जिसमें 11 सब्जेक्ट्स 12,500 प्लस MCQs कवर किए हैं। जिनको भी PDF चाहिए होगा, व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज करके PDF आप प्रिंट परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग एंड CVP एनालिसिस के कुछ MCQs। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज। तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट, सेकंड सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, थर्ड फिक्स कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट एंड सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड। ठीक है, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट, सेकंड, if sales 5 lakh and contribution 1,50,000, what is the PV ratio? तो PV ratio means contribution divided by sales into 100 means 1,50,000 divided by 5 lakh into 100 means 30% जो आएगा इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट, थर्ड, a company has fixed cost 3 lakh, PV ratio 25%, what is the break even sale? तो BEP सेल्स का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय P रेशियो मींस 3 लाख डिवाइड बाय 25% मींस 12 लाख। तो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे थर्ड, 12 लाख। नेक्स्ट, फोर्थ, sales are 9 lakh and break even sales are 7,50,000, what is the margin of safety? The margin of safety means actual sales minus BEP sales means 9 lakh minus 7,50,000 means 1,50,000 is a correct answer. Next, fifth, if selling price increase but variable cost and fixed cost remain constant, what will happens to BEP? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट BEP will increase, BEP will decrease, BEP will remain constant and cannot be determined. तो करेक्ट आंसर है सेकंड, BEP will decrease because increase in selling price, increase contribution per unit will reduce the break even point. So BEP will decrease. Next, sixth, a product sell for 150 rupees per unit and with variable cost of 90 rupees per unit. Fixed cost is 3 lakh. What is the break even point in units? So contribution means sale minus cost. So 150 minus 90, so 60 rupees, and then BEP means fixed cost divided by contribution. So 3 lakh divided by 60 means 5,000 unit is a correct answer. Next, seventh, if sales 8 lakh and variable cost 5,60,000, what is the PV ratio? सबसे पहले contribution निकालो and then PV ratio निकालो। Contribution means sales minus variable cost means 8 lakh minus 5,60,000 means 2,40,000 contribution। PV ratio निकालना है तो contribution divided by sales means into 100, तो 2,40,000 divided by 8 lakh into 100 means 30%। तो 30% इसका correct answer. Next, 8, fixed cost 4 lakh, selling price 100 per units and variable cost 60 rupees per unit. What is BEP in unit? तो कंट्रीब्यूशन निकालो एंड देन BEP निकालो। कंट्रीब्यूशन मींस 100 माइनस 60 जो है 40 एंड BEP मतलब फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, तो 4 लाख डिवाइड बाय 40 मतलब 10,000 यूनिट्स क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर है। Next, 9, if PV ratio is 40% and sales are 10 lakh, what is contribution? तो contribution निकालना है तो sales into PV ratio, तो 10 lakh into 40% मतलब 4 lakh, तो 4 lakh क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर आएगा। Next, 10, if margin of safety is 2 lakh and PV ratio is 25%, what is profit? तो profit means margin of safety into PV ratio means 2 lakh into 25% मतलब 50,000, तो 50,000 क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, 11, when variable cost per unit increase but selling price remain constant, the PV ratio will, तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट increase, remain constant, decrease, become zero। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, decrease, because contribution decrease means PV ratio decrease। नेक्स्ट, वैसे देखिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए PDF अवेलेबल है, जिसमें 25 चैप्टर प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशंस दिए हैं।
जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट 12th, if BEP sales are 6 lakh and PV ratio is 30%, fixed cost will be। देखो ऑप्शन है फिक्स कॉस्ट निकालना है तो बीईपी सेल्स इंटू पीवी रेशियो मीन 6 लाख इंटू 30% तो आएगा 1,80,000 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 13, इफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 25 रुपीज एंड फिक्स कॉस्ट इज 2,50,000, व्हाट इज बीईपी इन यूनिट। ठीक है, तो बीईपी निकालना है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मींस 2,50,000 डिवाइड बाय 25 तो 10,000 यूनिट्स यहाँ पे भी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट 14, सेल्स 12 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 7 लाख टू 20,000, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन। तो 12 लाख माइनस 7 लाख 20,000 तो 4 लाख 80,000 आएगा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट 15, इफ फिक्स कॉस्ट डबल व्हाइल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट देन बीईपी विल। तो बीईपी निकालने का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, इफ फिक्स कॉस्ट डबल देन बीईपी आल्सो डबल, तो करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट डबल। Next 16, which of the following is used to measure risk in CVP analysis? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कंट्रीब्यूशन रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, फिक्स कॉस्ट। तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बिकॉज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट हाउ मच सेल्स कैन फॉल बिफोर रीचिंग बीईपी। नेक्स्ट 17, if selling price decrease while cost remain unchanged the BP will। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, बिकम जीरो। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट इंक्रीज, बिकॉज लोअर सेलिंग प्राइस मींस लोअर कंट्रीब्यूशन मींस हायर बीईपी। नेक्स्ट 18, a company sell a product at 120 rupees per unit, variable cost is 80 rupees per unit and fixed cost is 1,60,000, what is the break even point in unit। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकालना है फिर बीईपी निकालना है। तो कंट्रीब्यूशन मतलब सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट मतलब 120 माइनस 80 मतलब 40, देन बीईपी निकालना है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मींस 1,60,000 डिवाइड बाय 40 मींस 4,000, तो 4,000 यूनिट्स क्या आएगा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 19, if contribution 3 lakh and fixed cost 2,20,000, what is profit। सिंपल 3 लाख माइनस 2,20,000 मतलब 80,000 क्या आएगा प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट 20, which assumption is fundamental of CVP analysis। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कॉस्ट आर अनप्रेडिक्टेबल, सेकंड सेलिंग प्राइस चेंज फ्रीक्वेंटली, थर्ड कॉस्ट आर क्लासिफाइड एज अ फिक्स्ड एंड वेरिएबल एंड फोर्थ आउटपुट वेरीज रैंडमली। तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड cost can be classified as a fixed and variable because CVP analysis assume clear classification of cost into fixed and variable। वैसे देखिए फाइनेंस ऑफिसर के लिए पीडीएफ अवेलेबल है क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश ग्रामर, जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।